So very warm welcome, students. So the topic what we have to start, the topic is what? Imagination. It's a poem and it is narrated by George Bernard Shaw. George Bernard Shaw was a great playwright also of his time. Actually, he is known for preliminarily for his plays. His plays are outstanding for their wit and understanding philosophy. So in this poem again, it means what? A philosophy is there. And philosophy is what? Let's start. Let's see. We will study through Paradise and we will see what philosophy he has shown. Actually, I is used here. So whenever I is used, student, I shows the narrator. I shows who? Narrator. It means this total imagination is going to talk about like an autobiography of George Bernard Shaw. तो यहाँ पे आई जैसा इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है. फर्स्ट पैरा में ही विल से दैट आई यूज टू प्ले एट पायरेट्स. मैं पायरेट्स मतलब समुद्री डकैत की तरीके में रहना चाहता हूँ. देन आफ्टर विविड इमेजिनेशन ही हैज shown, बहुत सारी कल्पनाएं उन्होंने देखी है. समटाइम्स ही वांट टू लिव विद द एस्किमोज आल्सो. देन ही रीड द बुक ऑफ जुल्स वर्ने आल्सो एंड ही वांटेड टू गो फॉर टू द मून. Lot of imagination, vivid type of imagination he has shown in this chapter, in this poem. You will enjoy this. So like us, we are also going to be imaginative all the times कि ये हो जाता, काश ये होता, काश वो होता. So that's why the reason George Bernard Shaw was a famous playwright also. And in the last he will say that world of फैंटेसी एंड इमेजिनेशन, जो एक दुनिया है वो फैंटेसी और इमेजिनेशन की दुनिया है. और इस दुनिया में आई ग्रू अप, मैं बढ़ा हूँ. एंड चाइल्डिश वर्ल्ड एट द एज एन एंड, और जो बचपन का दिन है वो खत्म हो रहा है. आई स्टिल डू लाइक द मिस्टीरियस. एक्चुअली ही always wants to be shown like a mysterious person. He didn't want to show reveal his secrets. तो ये एक इमेजिनेशन है पूरी पोयम. कभी उसमें वो पर्वत पे जाना चाहते हैं, कभी चांद पे जाना चाहते हैं, कभी वो कुछ कल्पना करते हैं. तो विविड टाइप ऑफ इमेजिनेशन वी विल सी हियर स्टूडेंट्स. सो बी अटेंटिव, ओपन योर बुक and start with the Paradise. Okay. Okay, let's start. So here you can show I used to play at pirates and sailed the seven seas. Then I was a cowboy. These simple things did me please. Actually, what the unique things for us? Only these things are the simple things for him. And he is saying that I used to play at pirates. मैं pirates की तरीके के जीना चाहता था. And sailed the seven seas, और 7 समुद्र को पार करना चाहता था. Then I was a cowboy. Cowboy is basically a person in some Dutch countries it is going to be used. cowboy बेचा मतलब कड़रिए जैसा घूमना चाहता था, ऐसे ही मतलब पिन मतलब एकदम मौज मस्ती में. I had a vivid imagination. Again he is saying that he had a vivid means I'll show you this meaning. Clear imagination he has. Adventure was on my mind. Only adventure is going to be fulfilled in his life. He always wants to be adventurous. He wants to go here and there like a wanderer. He wants to collect things. He wants to enjoy the life. All times he just want to be adventurous. I discovered the joys of reading and escaped the daily grind. I discovered, मैंने खोजा है तो joys of reading, पढ़ने की जो खुशी होती है, and escape the daily grind. Daily grind means the boring and tedious daily routine. And daily routine को मैं follow नहीं कर सकता. What we are using like ना, what our routine is what? Daily wake up in the morning, taking lunch, going to school, study. Like if we are a teacher, this routine is us. If you are a student, your routine is another way. But he wants to be live like a vivid manner. He don't want to be a piece of सिंपल रूटीन एज फॉलोइंग, कि एक ही रूटीन को फॉलो करेगा. वो अलग अलग तरीके से जीना चाहता है. वंस आई लिव्ड विद द एस्किमोस. जब एक बार एस्किमोस के साथ रहना चाहता था. इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो. बर्फ़ की जो ज़मीन होती है, बर्फीले जगहों पे. Went hunting and fishing. My fantasy was all aglow. All aglow means bright and active. And he wanted to go for the hunting and fishing also. मतलब मछली मारने के लिए भी जाना चाहता है, शिकार करने के लिए भी जाना चाहता है. फर्दर ही विल एक्सप्लेन. आई रीड अ बुक ऑफ जूल्स वर्ने. मैं जूल्स वर्ने की एक किताब भी पढ़ रहा हूँ. एंड वेंट ऑफ टू द मून. Now in this para he wants to show his fantasy about book. Okay, he wanted to go to the moon and just take a look. Then it was time to return. I spent time in the forest of Africa.
with Dr. Livingstone as my guide. Now he is showing his interest with the Dr. Livingstone to go to the forest of Africa, and as a guide he should be there. Then off again to America, और फिर से मैं अमेरिका आऊँ with Huckleberry Finn I did hide, और मैं इनके साथ विद Huckleberry Finn के साथ आऊँ और यहाँ पे छिपा रहूँ. इन माई वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन, मेरी जो दुनिया है, मेरा जो संसार है, जो इनकी दुनिया है ना बर्नार्ड शॉ की, फैंटेसी एंड इमेजिनेशन. फैंटेसी मीन्स टोटल एडवेंचरस एंड इमेजिनेशन कल्पनात्मक है. आई परफॉर्म सच वंडरफुल डीड्स. डीड्स मीन्स होता है वर्क. और आई हैव परफॉर्म, आई हैव जस्ट इमेजिन सच वंडरफुल थिंग्स एंड आई वॉन्टेड टू लिव लाइक दैट. आई डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द simple boring routine. I just want to live like that. I want to be wanderer. I want to be here and there, go here and there and see the new things. A hero of all the nations, I was the one that did succeed. A hero of all the nations, सारे राष्ट्र का जो एक हीरो होता है ना, जैसे लाइक देशभक्त जो हीरो होते हैं, आई वॉज द वन दैट डिड सक्सीड, और मैं बाद में एक सफल तरीके से वही बनना चाहता था हूँ. देन आई ग्रू अप माई चाइल्डिश वर्ल्ड एट एन एंड, और आई ग्रू अप, मैं बड़ा होता गया, माई चाइल्डिश वर्ल्ड एट एन एंड, और जो मेरा बचपन का दुनिया है, जो मेरा जो बचपना है ना, इट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल नाउ, इट इज़ गोइंग टू बी फिनिश नाउ, अभी ख़त्म होने को आ रही है. आई हैड बिकम सीरियस, इट नियरली ड्रोव मी अराउंड द बेंड, और आई हैड बिकम सीरियस, और मैं निश्चित रूप से गंभीर हो चुका हूँ. इट नियरली ड्रोव मी अराउंड द बेंड, हेयर आई विल शो यू द मीनिंग. drove me around the bend means made me crazy. It means this thing has made me the crazy. I still do like the mysterious. मैं अभी भी मिस्टीरियस बना रहना चाहता हूँ, रहस्यमयी बना रहना चाहता हूँ. This is the message I am trying to send, and this is only my conveying message. This is only my heart's panic desire. What I'm going to send, what I'm trying to send to the viewers, to the listeners, that I still do like the mysterious. I don't want to reveal my secrets. So the whole poem you understood, you taught with me. What you found? Actually, George Bernard Shaw is known primarily for his plays. Okay, his plays Pygmalion has been written into a charming musical and movie, My Fair Lady. Though he is probably the greatest playwright of the 20th century in English, he has written some poems too. Okay, and in this poem, he writes about the marvelous imagination of children which makes childhood magical. Actually, this thing is going to relate with us also. When we are childish, when we are in childish age, lot of vivid types of imagination we had, and that imagination he just has revealed here, he just has shown here, that like a child also I want to be play like a pirates. I sailed in the seven seas. I was be a cowboy. Then adventurous always on my mind. I discovered the joys of read a books of Jules Verne, then spend times of forest of Africa, then again return back to America. Again the hero of the nation would be and still do like mysterious. So these things he has explained here. I hope you understood the concept. It is total imagination and about fantasy. Okay, so students, now ready for the classwork.